Bismillahirrahmanirrahim. So this video is about operator overloading, and I'll be discussing various a few uh, programs that or code that would explain operator overloading in some detail. Okay, so the problem which I've selected for this particular video is a distance problem. So the problem is that um, the user enters the distance in feet and in inches, and we'll have to overload the minus sign in a way. Okay, if you apply that minus sign to the distance reduces by 1 unit. Uh, 1 unit from feet and 1 unit from inches. So let's say if the user enters 5 feet 6 inches, by applying the minus operator on the distance, the new distance should be 4 feet and 5 inches. So let's just start by defining a class that calculates or that finds out or that actually stores the distance entered by the user. So we'll start by adding this using namespace std, and then we'll define the class. So let's define the class as distance, and we'll keep the members of this distance class as public. So here you have the distance class, and then we have said that okay, we'll keep the members of this class as public. Okay, so let's just define the member objects, and the member objects for this particular class would be, as I've explained to you, would be 2 integer variables, feet and inches. So you will enter the feet and then the inches separately. So these are all again public. Then the next step would be, obvious step would be to define a constructor that initializes the distance, and here is the constructor that initializes the feet and the inches. So this is a parameterized constructor, and you already know the use of this pointer. So we have used this pointer to actually feed in the value of feet and inches that are entered this constructor, and this is the parameterized constructor. Now what do we want here? So let's say कि अगर मैंने, and we'll come to this point later, कि इसकी overloading हम किस तरह से करते हैं, but initially what we'll do is कि we'll just see whether this works properly or not. So in the main program, what we can do is that we can define an instance of the distance, and here is the instance of the distance defined. So we can define the instance of a distance here. So distance d1, and we have entered a value of 8 and 9, so that means that it's 8 feet and 9 inches. That's the distance that you primarily will be getting, right? So far so good. Let's just try to execute this, and
the program actually compiles, so there is no issue so far. So what I want is कि let's say कि D1 मैंने यहाँ पे enter किया है, so what I want is that I want to develop a program, a function, कि अगर मैं इसमें -D1 करूँ तो क्या होना चाहिए, D1 के डिस्टेंस जो है ना वो रिड्यूस बाय यूनिट होना चाहिए, दैट मीन्स कि 8 7 हो जाए और 9 जो है वो 1 हो जाए, सॉरी 8 हो जाए. सो यू कैन वेरी इजीली सी कि इसमें हमारे पास जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं. जो क्लास में एग्जांपल हमने बॉक्स वाली की थी और उसके अलावा जो एग्जांपल्स हमने की उसमें दो ऑब्जेक्ट्स थे, तो the operator was applied between two objects. यहाँ पे the operator is being applied on a single object. तो इस केस में वो जो इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है और आर्ग्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा. और इस केस के अंदर जो सिंटेक्स है दैट विल बी यूजिंग टू डिफाइन दिस ओवरलोडिंग ऑपरेशन, that syntax would also be a little different and it will be easier to do that. तो इस केस में जो रिटर्न टाइप है ऑफ आफ्टर अप्लाइंग दी ऑपरेटर, वो रिटर्न टाइप भी कोई नहीं, क्योंकि हम ये ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, और एक कोई सेकंड ऑब्जेक्ट इसमें से आउटपुट नहीं हो रहा. सो आउटपुट सेकंड ऑब्जेक्ट उस केस में होगा कि जब आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा, और उसकी भी एग्जांपल हम भी देखेंगे. सो क्या होना चाहिए, वो होना ये चाहिए कि जब मैं एक ये ऑपरेटर अप्लाई करूँ, माइनस को मैंने ओवरलोड करना है ताकि जब मैं -D1 के साथ यूज़ करूँ तो क्या हो, D1 का जो डिस्टेंस है वो उसका फीट भी बाय 1 यूनिट रिड्यूस हो जाए, 7 हो जाए, और इंचेस भी बाय 1 यूनिट रिड्यूस हो जाए, यानी 8 हो जाए इस केस में. ठीक है जी. सो लेट्स जस्ट डिफाइन द ओवरलोडिंग ऑफ माइनस and the operation on the distance object. So let's just do that. So let's say कि मैंने यहाँ पे I've just added a comment here. So what would be the program look like? You already know कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम कैसे करते हैं. हम आउटपुट जो ये इस ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो रिटर्न टाइप है उसको डिफाइन करते हैं. बिकॉज इन दिस केस देयर इजंट एनी रिटर्न टाइप. द रीज़न इज के हमने D1 में जो डिक्रीमेंट किया है, जो रिड्यूस किया है, रिडक्शन की है, वो हम किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं कर रहे, और ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है कोई रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा इन द फॉर्म ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट. तो इस केस में इसकी रिटर्न टाइप जो है वो हमारे पास वॉइड होगी, और ऑपरेटर हमारे पास माइनस का ऑपरेटर होगा, और आर्ग्यूमेंट इस केस में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट इस केस में कोई इस तरह से है नहीं. द रीज़न फॉर दैट इज कि इसमें ना तो वो कोई इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम इसमें ले रहे हैं. इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट और आर्ग्यूमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ओवरलोडिंग में होगा. बाइनरी का मतलब ये है कि जिसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो. तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, हमने एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर माइनस अप्लाई करना है. तो इसके लिए जो हम डेफिनेशन ऑफ ओवरलोडिंग करेंगे inside the class, and we are doing it inside the class, it would be very simple. No return type, it's void. Operator is a keyword. Minus को overload करना चाहते हैं, and there is no specific argument that is being passed into this particular case. तो करना क्या है, फीट को उठाएं और उसको रिड्यूस कर दें by 1, और इंच को उठाएं और उसको रिड्यूस कर दें by 1. So what would be the body of this program look like? The body of this function would look like this, right? So this is the body of the program, right? So यहाँ पे feet लें, reduce it by 1, inch लें, reduce it by 1, and then let's see कि output क्या आती है. We simply display this. ठीक है ना जी. और ये जो ब्लॉक है ऑफ प्रोग्राम,
of this function, overloading function. उस ब्लॉक को आप यहाँ पे ख़त्म कर दें दिस क्लोजिंग ब्रेसेस। तो ये हमने एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन हमने इस केस में डिफाइन कर दिया। तो अब होना क्या चाहिए कि अगर मैं -d1 करूं तो मेरे पास d1 की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होनी चाहिए और बाय 1 एंड लेट्स सी कि क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता। एंड इन दिस ऑपरेटर we have applied the operator to d1 and because there is only a single object here, therefore this will not be the case of binary operation. Unary operation जो है वो यहाँ पे आएगा। So let's just run this and let's see what is the outcome of this program. I hope it works.